Bye bye.
Hello, everybody. We will be starting soon. Welcome to Smart Education Learning Forum. Within few minutes, we will be starting our webinar. Okay. So just before starting, we will be going live on YouTube. Hello, Ed. Good morning. Good morning, Vishal uncle. Good So morning. before starting, we will request all of you to just mute yourselves so that we can avoid background voices and it won't disturb our speaker as well as our listeners for concentrating on the topic. Good morning, Vishal sir. Good morning, Munab bhai. કેમ છો sir? બસ મજામાં. Hope you are also doing good. Yes, sir. Thank you. Okay. Sir, good morning. Very good morning. Bhai. Sorry, little bit of disturbance will be there from my neighborhood. In fact, some carpenter work is going on over which we don't have any control. So I'm really sorry for that. Okay, so let's start. Now we are live on YouTube. So once again, welcome all to Smart Education and Learning Forum. Again, one fine Sunday, we are gathering over here. Means to increase our knowledge and spending more time towards education. So we all know that since few days and especially since 2 to 3 weeks, market is not going well and upsetting many of us. And so that's why in this time period, we thought that this will be a special. બંધ કર બેટા દરવાજો બંધ. Uh, Vishal uncle, you just unmute yourself. Yeah, I did. So let's go ahead. So as I was saying that since few weeks, market means 2 to 3 weeks especially that market is not going very well and it is upsetting sentiments of might be all of us. So in this time period, it would be a great time that we bring such a webinar to which will help us in increasing our profit means profit booking and stop making loss. So we thought it would be a great time period. And along with this webinar, we are also bringing a workshop next week regarding which more details will be shared by Mr. Vishal Baliya himself. So stay tuned for that too. And before moving towards webinar, we will just have a small video of our side. So we'll be playing. Boss, best of smart services. Smart Investment proudly presents Boss, best of smart services. Boss is designed to beat best of the best. Our writers' top picks will be provided in Boss. On average, 2 to 3 stocks recommendation will be given in a quarter from each writer contributing in Boss.
Recommendations will be a mix of different segments of stock market such as technical, fundamental, futures and options, technofunda, astrofunda, commodities and others. Advices will be either for intraday, short-term, mid-term or long-term positional. Exclusive calls will be advised in this service. Viewable research report for the recommended advice will be provided for positional delivery advices within 48 hours of recommendation inside your web login only. No reports for options, short-term calls like BTST, intraday or likewise. Stock details will be given in below format: stock name, advice price, target price, holding period, weightage allocation if applicable, stop loss, one-line reason for advice. Investments are always subject to market risks. For any query, call or WhatsApp on 9825 306980. Subscribe now. Visit our website www.smartinvestment.in or email us on info@smartinvestment.in. Okay, so that was a small video of our service named Boss. So we have started this service in around 15 November, and till now, even during the bad market time period, our calls are doing great. So now moving towards webinar, I would like to introduce our today's speaker, Mr. Vishal Baliya. So many of you might be knowing him, many of you might be new for him. So I will just give a quick introduction regarding him. So he was an international marketing manager in a MNC company, and he left his job and he came back to India, and he started his own startup. And along with that, he approached the journey of educating people and sharing his knowledge so that people like me, you and everybody can get his knowledge and create more profit and reduce losses. Many of you might have attended his webinar and as well as workshop, and in that he had really gave a very good example which make the remarkable example, which was mother, father and son example, and many of you might be knowing him due to that example. And along with that, we also hosted a quiz contest last week, and he was like Amitabh Bachchan of KBC for us. So many different examples for him, but not much going into it, and just starting the webinar soon so that you yourself can enjoy and get more through his wisdom. And we will hope that today also something more remarkable example he will bring for us. So handing over to you, Mr. Vishal uncle. Thank you. Thank you for your grand introduction. And please, if you can enable the sharing, then I will start my presentation. Yes, you are the host, so you can start. A host disabled Okay. screen sharing. This is Done, what done. it is written. Done. Okay. So today, welcome friends. Today we will discuss about one of the basic most important criteria by which we can increase your profitability. That is risk management. Stop losses, profit booking, everything is about the whole idea is about risk management. So we will discuss about risk management, stop losses, which is the part of risk management. We will discuss about trailing stop losses. We will also discuss about profit booking. When is profit booking required? EMS, we will also discuss about EMS for profit booking. Some examples we will see how EMA, with the help of EMA, we can book profit. In addition to that, we will also
discuss about what will be there in the workshop next week, and I will introduce you next week. The workshop that is going to be there is about in detail about profit booking, as well as we will learn how to set targets with the help of a tool called parallel channel. So I will introduce you to parallel channel towards the end of the presentation. After that, what we will do is we will have a Q&A session where I can take your live questions and live questions regarding profits, stop losses, as well as if you have any query regarding any stock, then we will see it on an educational basis. I can give you my educational opinion about it. Then you can take decisions based on what your investment advisor tells you. So let us begin. Let us begin with an example of why stop loss is required and what is risk management all about, where to book profit. Now, for example, you toss a coin in the air. Okay. What is the chance that this coin, the call that you give about the toss, will fall in your favor? The probability is exactly 50%, right? So if you invest all your money based on that one single call, your risk is 50%. Now, for example, what you are going to do is you are going to toss the same coin 100 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 बार toss किया. Then how many times, and you keep saying, you keep consistently calling heads or 100 बार toss किया. So law of averages says, or you consistently call tails or 100 बार coin toss किया. So law of averages says that at least 50 times you will be correct. Now, what are the advantages that you can deduce from these two aspects of the example we just studied? What deductions I will take from this example of tossing the coin is that, it is high risk to take big trades in a single call. Say I feel very someone's noise is coming. If you can mute everyone. If you can Yes, I will mute everybody and then we will. Okay. Okay. I am for now I am enabling allow participants to unmute themselves so that we can go with the issue. Later when we have question answer session or something like that, you can Yes. unmute them and we'll let them ask the question. Yes. Okay. So now everybody is on mute and you can mute yourself. Yeah. So now, if you have a single call, if you, for example, read about some stock, or if some technical analysis that you do, or some research report that you get, and if you invest all your money, you are convinced that नहीं ये भाई जो बोलते हैं वो तो सही है, राकेश झुंझुनवाला ने ये स्टॉक खरीदा तो ये कंपनी चलने ही वाली है, और XYZ या विशाल बलिया ने बोला है तो फिर ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए. So thinking that you invest all your money in that single call given by any research house or any investment advisor or any technical analyst or any research analyst or any fundamental analyst. So they have done proper research, but still your trade becomes a high risk trade. Because that call can work, that call cannot work. There are a lot of factors, people give call, but then there are a lot of microeconomic factors. बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं. गवर्नमेंट ने कभी कुछ
अचानक से कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी, या वो कंपनी में कुछ अचानक इंफॉर्मेशन आ गई वो कंपनी के बारे में गलत, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ हो गया, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, या किसी ब्रोकरेज हाउस का कुछ गलत रिपोर्ट आ गया, तो आपका रिस्क भले ही कितना भी अच्छा कंपनी हो, लेकिन आपका रिस्क उसमें बहुत बढ़ जाएगा जब आप एक ही कॉल लेते हैं, या जब आप बहुत कम कॉल में ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट you should take many small trades with a fixed stop loss. अब ये स्टॉप लॉस क्या है और स्टॉप लॉस लगाने से क्या फायदा होता है? तो जैसे नाम सजेस्ट करता है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस का मतलब है आपका नुकसान होने से अटकाना, बचाना नहीं, अटकाना. टू स्टॉप योर लॉसेस. ओके, सो लॉस इज देयर, लॉस विल बी देयर, लॉस माइट बी देयर, but to stop it and limit it to a certain small proportion, that will be stop loss. So now what happens is that instead of taking one big trade based on some report, you are taking many small trades with fixed stop losses. कि भाई 5% का स्टॉप लॉस लगा दिया, किसी ने 8% का लगाया, किसी ने 10% का लगा दिया, या किसी ने जो लेवल है उसके नीचे जो सपोर्ट है, those of you who attended my webinar and workshop last time, and I am sure you have studied or you have been part of many other webinars and workshops where you have learned where to put supports and stop loss lines. तो जहां से आपने खरीदा उसके नीचे जो सपोर्ट है वहां पे आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया. यू पुट अ स्टॉप लॉस अराउंड दैट रीजन. देन व्हाट हैपेंस इज यू कैन लिमिट योर लॉसेस. आप अपने लॉस, नुकसान को रोक सकते हैं वैसे कॉल में जो कॉल गलत गया. तो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने वो ट्रेड एग्जिट कर दिया. नाउ कमिंग बैक टू द कॉइन टॉस एग्जांपल. ओके, कॉइन टॉस के एग्जांपल पे फिर से आते हैं. समझिए 50 आपने 100 बार कॉइन टॉस किया था, वैसे ही आपने 100 कंपनियों के कॉल में इन्वेस्ट किया. बेस्ड ऑन सम रिसर्च, बेस्ड ऑन सम एनालिसिस, बेस्ड ऑन सम प्रॉपर information that you collected or that you got. Now 50 of the calls go correctly as per your thought process, and 50 calls don't go correctly, or they face resistance and they fall back, or the price falls back. तो इसमें क्या होगा कि जो 50 कॉल्स सही जा रहे हैं, the 50 calls that go correctly, you let them grow. उसको आगे बढ़ते रहने दो, आगे बढ़ते रहने दो, आगे बढ़ते रहने दो. और जहां पे जो कॉल गलत गया, the call which went wrong, you get out of that call when it hits your stop loss or when the price falls below that stop loss. Okay, तो अब क्या हो गया कि 50 कॉल में you will have limited loss, and in other 50 calls that are going correctly, you will have unlimited profit, right? So this is how, this is the way to make money in stock market with the help of stop losses. और हमने अभी तो यहाँ पे जो बात की वो बात थी कि भाई 50 बार 100 बार कॉइन टॉस किया, राइट? अभी कॉइन टॉस किया तो कॉइन में तो दिमाग नहीं है, वो तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही प्रोबेबिलिटी है. बट व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स लाइक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, लाइक स्मार्ट प्लस, लाइक स्मार्ट बोनांजा, और अभी जो आपने वीडियो देखा बॉस सर्विसेज का, अगर आप वो बॉस सर्विसेज सब्सक्राइब करते हो, राइट, तो उसमें जो आपको कॉल्स मिलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से
जो कॉइन आप टॉस करते हैं तो 50% सही गिरेगा, 50% गलत गिर सकता है। लेकिन इतने सारे राइटर्स जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के साथ हैं, स्मार्ट प्लस के साथ हैं, बॉस के साथ हैं, स्मार्ट बोनांजा के साथ हैं, वो लोगों ने इतना सारा आपके लिए रिसर्च किया हुआ है, वो लोगों ने इतना सारा टेक्निकल स्टडी करके, फंडामेंटल स्टडी करके, यहाँ तक कि एस्ट्रो स्टडी करके भी, एक एस्ट्रो का भी कॉलम आता है, तो एस्ट्रो स्टडी करने के बाद भी फंडामेंटल, टेक्निकल, एस्ट्रो, मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक, ये सब स्टडी करने के बाद जो कॉल आपको दिए हैं, मेरे ख्याल से उनकी प्रोबेबिलिटी टू गो करेक्ट इज मोर देन 50%. आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस. तो आप ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ें, ऐसी जगह से इंफॉर्मेशन लें, खुद अपना स्टडी करें, अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें, तो आपको बहुत अच्छे फिल्टर्ड कॉल्स मिलेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी विल बी मोर देन 50% टू स्ट्राइक करेक्टली. So now you have the source from where you get more than 50% probability of successful calls. ये सब आपके पास अवेलेबल है. कहां से सक्सेसफुल कॉल मिल सकते हैं आपको, राइट? तो यहां से आपको सक्सेसफुल कॉल मिल रहे हैं. उसमें बाय चांस अभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते. अभी like you saw last week, FII is selling relentlessly since last 15-20 days, but DII is very positive about the market. Retail investor is very positive about the market. They are continuously buying. एक दिन में FII is selling more than 4,000 crore, more than 2,000 crore, more than 3,400 crore, more than 4,500 crore. But that is not deterring DII to buy. That is not deterring high net worth institutions and individuals to buy. That is not deterring retail participant to buy less in Indian stock market. तो जो लोकल आदमी हैं उनको तो ज्यादा ही पता चलता है, लोकल रिसर्च है. अभी यूएस में बैठ के या यूके में बैठ के कोई रिसर्च एनालिस्ट है, he is doing research analyst about a company based in Halol GIDC of Gujarat, बड़ौदा के पास जो पंचमहाल है, तो उसका इंटेलिजेंस about that company will definitely be less than local investor, will definitely be less than high net worth individual investor, will definitely be less than domestic research analysts, right? तो अब ऐसे लोगों के रिसर्च की गई हुई कॉल्स आपको मिल रही हैं, वो लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो दैट इज ऑल द मोर रीजन. थोड़ा बहुत करेक्शन देखो, 5-10% मार्केट इतनी ऊपर गई है तो आ सकता है, आना भी चाहिए. तभी तो जो लोग पिछली रैली में छूट गए थे इन्वेस्ट करना, उनको मौका मिलेगा. जो लोग आधा इन्वेस्ट करके बैठे उनको मौका मिलेगा कि वो बाकी का आधा इन्वेस्ट कर दें. जो लोग पोर्टफोलियो चर्न करना चाहते हैं उनको मौका मिलेगा. दे विल गेट अ चांस to churn that portfolio. New people will get chance to enter the stock market, as well as there is a chance of more participation in the market when the market falls. तो market falls से घबराना नहीं है. Market falls आते रहेंगे, जाते रहेंगे. You play like a test match. You be a long-term investor. You will definitely benefit from the investments, especially in the equity market. But you need to keep stop losses and limit the loss in the call that might for some reason go wrong, and let the call grow where you are making profit. Now, for example, the call which is going correctly, okay. This will be the best way to manage your risk and make more money. Investing big in few calls, is always more risky than
investing in many small calls. वो कहते हैं ना कि भाई एक बड़ी जंग जीतने के लिए कई छोटी छोटी जंग जीतनी पड़ती है. To win a war, you need to win many battles. To have small wins, win small battles, invest small in stocks and win. So it is more important for you to win battle, to win the war, to win many small battles. Okay. Monitoring stop loss and exiting the failed calls without any delay or sentiment attached to the stock is primary importance. ये बहुत important line है. This is the most important line for an investor. You know, when you buy a stock, somehow वो एक फीलिंग दिया गया कि आप भाई कंपनी में पार्टनरशिप खरीद रहे हैं और वो थोड़ा सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाता है. राइट. क्या रे रिलायंस तो मैं कैसे बेचूं यार, मेरे पिताजी के पास भी था, मेरे दादाजी के पास था, मैं भी रख के बैठा हूं, अभी मैं तो ये स्टॉक नहीं बेचने वाला. या फिर मैंने तो रुचि सोया ये प्राइस पे खरीदा था, उसके बाद तो बाबा पता रामदेव ने उसको खरीद लिया और आई एम फॉलोअर ऑफ बाबा रामदेव, आई विल नॉट सेल दिस स्टॉक. आई एम अ बिग फैन ऑफ नारायण मूर्ति एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेल इन्फोसिस शेयर फॉर एवर. ऐसे ऐसे सेंटिमेंट जो अटैच हो जाता. मैं कोई स्टॉक का कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, जस्ट जो नाम में यूज कर रहा हूं वो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे है. तो somehow what happens is that we become sentimental about the stocks that we pick. We become sentimental, एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है जो स्टॉक हम खरीदते हैं उसके साथ. तो ये अगर भावनात्मक जुड़ाव जो है उसको हम कट कर दें, भावना अपनी जगह पे है, सेंटिमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे मेरे प्रॉफिट से मतलब है, then you will definitely be able to make money in the stock market. कोई भी हो, आपने एक स्टॉप लॉस फिक्स किया है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे अदानी हो, चाहे XYZ कंपनी हो, अगर स्टॉप लॉस हिट करता है, ये सबसे मुश्किल बात है. मैंने देखा है, मेरे लिए भी मुश्किल होता है कई बार. कोई इतने तुम कन्विक्शन के साथ कोई स्टॉक लेते हो, यू फॉलो सम स्टॉक विद रियल कन्विक्शन, यू हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च, यू हैव डन लॉट ऑफ एनालिसिस, यू हैव डन लॉट ऑफ इन्वॉल्व योरसेल्फ टू सिलेक्ट इट एट द राइट टाइम. एंड फॉर एग्जाम्पल द कॉल गोज रॉन्ग, 5% गिर गया, मैंने 8% पे स्टॉप लॉस रखा है, नहीं अभी तो स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है तो मैं क्यों घबराऊं. देन इट हिट्स 8% विच इज योर बेंचमार्क, कि नहीं 8% पे आई हैव टू एग्जिट, बट देन इट हिट्स 8%, नो थोड़ा आई विल मूव द स्टॉप लॉस टू 10%, क्या होने वाला है. then it comes to 10%, you move the stop loss to 12%, अरे 2% और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट ये जो इनडिसिप्लिन आप में आ जाएगा, that will create major issues for your investment in your investment cycle. This will disrupt your investment agenda. ये बोलना बहुत इजी है, मैं जानता हूं. जब अपना रिसर्च किया हुआ कोई स्टॉक लॉस को हिट करता है, देन मेनी टाइम्स वी आर नॉट एबल टू एग्जिट. तो ये स्टॉप लॉस जब हिट होता है तब वो स्टॉक में से निकल जाना थोड़ा मुश्किल चीज है. बट इफ यू वांट टू मेक मनी, you have to come out of that stock when it hits the stop loss. There was a saying of Lord Buddha, कि holding on to your anger is like holding on to burning coal. Coal will damage your palms and anger will damage your mind. ठीक है, उसी तरह से holding on to your losing stocks will damage your wealth. ये मैं कह रहा हूं. बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी, दैट यू बी डिसिप्लिन. वो क्रिकेट में है ना कि ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल को छोड़ना है, मतलब छोड़ना है,
तभी आप फॉरेन की पिच पे सक्सेसफुल होंगे. डोंट play poke at the ball outside off stump. So that discipline, if you maintain, you can become a great test match player. Similar discipline is required in the case of investment. Okay, ये stop loss hit करना है. I will not attach sentimentally to any stock. If this stop loss is getting hit, I will leave that ball. I will get out of that stock when the stop loss is hit. So thus, this will be your mantra to success in the stock market. Remember one thing, that it is important to make money in the stock market, but it is not important to make money from a particular stock in the stock market. I hope you understood what I said. स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत जरूरी है, बनाना चाहिए. हम सब पैसा बनाने ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है. कोई नुकसान करने तो इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, राइट? स्टॉक मार्केट में it is important to make money from the stock market, but it is most important to forget about any stock. वो स्टॉक से डिटैच रहो. चलता है ठीक है, नहीं चलता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसमें से एग्जिट हो जाओ. वो पर्टिकुलर स्टॉक में से ही पैसा बनाने की जिद क्यों है? मैंने यस बैंक 130 पे लिया था, वो 15 रुपया हो गया तो भी मैंने पकड़ के रखा है कि नहीं, एक दिन यस बैंक वापस आएगा 130 पे, तब मैं पैसा कवर करूंगा. अरे भाई, जब वो 80 था, when it was 100, when 90, you could have taken that money out, put in some growing company, and you would have made money from that, right? So this is how you need to keep your sentiments aside, and you need to stay disciplined. At the same time, you should think only about making money in the stock market. इस पर्टिकुलर स्टॉक में से पैसा कमाना. ओके, आपने XYZ का स्टॉक लिया, समझो आपने LG सुब्रोस का स्टॉक लिया, या बोडल केमिकल लिया, या SHKL कर लिया, उससे 20% नीचे आ गया, उसके रिजल्ट भी, फॉर एग्जांपल, मैं अगेन नाम किसी का ऐसे ही ले रहा हूं, कोई कंपनी का मैं अभी इधर एट प्रेजेंट कॉल नहीं दे रहा हूं. तो आपने स्टॉक लिया, बाय चांस जो एनालिस्ट था उसने सोचा होगा कि भाई रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि पिछले 3 रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे. फॉर एग्जांपल, रिजल्ट नहीं आया और वो स्टॉक गिर जाता है, आपका स्टॉप लॉस एग्जिट करता है, एग्जिट द स्टॉक. इसमें 10% गवाया तो कोई और स्टॉक में से वी विल मेक द मनी. देयर इज नो नीड टू मेक मनी फ्रॉम द सेम स्टॉक. अगेन आई एम रिपीटिंग. ओके, अभी 1-2 कुछ मैसेज आए हैं. वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके, इसके बारे में तो मैं थोड़ा और नजदीक से आके और बात करने का ट्राई करता हूं. ओके, तो होप यू गॉट और टू कवे दिस पॉइंट. अब हम जो वन ऑफ माय फेवरेट, जिसके मैं एग्जांपल देता रहता हूं, वो एक एग्जांपल मैं आपको अभी इधर दिखा रहा हूं, एक वीडियो का. तो गाइस, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? आंद्रे रसल की कोई गलती तो नहीं थी यहाँ पे, राइट? उसी तरह से
आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कई बार उनकी गलती नहीं होती, कई बार एनालिस्ट का कॉल सही होता है. मेनी टाइम्स द कंपनी whose stock is falling, it is not their mistakes. It might be a coincidence. It might be because government wanted to, frame some policy to stop some Chinese investors to come in. But then something went wrong and the effect went on some other company. ऐसे कई चीज हो सकती है. देयर आर मेनी मैक्रो इकोनॉमिक थिंग्स. अब पीवीआर, आइनॉक्स लीजर्स, ये सब जो हैं, लॉट ऑफ होटल स्टॉक्स, नाउ दे फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, उनका कोई गलती नहीं थी, कोविड आया, लेकिन कोविड आया तो ये सबके बिजनेस में नुकसान हो गई ना. हजारों ऐसे बिजनेसेस हैं जो इस तरह से रन आउट हो जाते हैं, जहां पे उनकी ज्यादा करके कोई गलती नहीं होती है. कहीं थ्रो मारा था, कहीं लगा, कौन रन आउट हो, किसको रन आउट करने की कोशिश कर रहे थे, वो रन आउट नहीं हुआ और कोई और रन आउट हो गया. राइट. तो मार्केट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज. वो म्यूचुअल फंड में भी बोलते हैं ना कि एडवर्टाइजमेंट में कि भाई क्या बोलते हैं एग्जैक्टली कि भाई इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो मार्केट में रिस्क तो रहेंगे. एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लास, जिसमें आप सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, आप रियलिटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी रिस्क हो सकता है. आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी रिस्क है. बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी में तो पिछले 10-12 दिन से क्या हो रहा है वो आपको मालूम ही है. 68,000 से बिटकॉइन 34,000 के आसपास घूम रहा है, या नीचे आ गया होगा रात को, मैंने आज सुबह चेक नहीं किया है. तो अनसर्टेनिटी तो हर एक चीज में होती है, हर एक बिजनेस में होती है. कई बार जैसे आपने ये वीडियो देखा, फॉर नो फॉल्ट ऑफ द कंपनी देयर स्टॉक प्राइस माइट सफर. राइट. तो इन सच केसेस व्हाट विल प्रोटेक्ट यू? अगर कुछ गलत हो गया तो कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत एक्सीलेंट कंपनी है, बट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एक सेंट्रल अथॉरिटी आदमी करता है. अब उस आदमी को कुछ हो गया, भगवान ना करे, देन स्टॉक ऑफ दैट कंपनी विल प्लमेट. कितनी भी बेस्ट कंपनी रहने दो, द स्टॉक ऑफ दैट कंपनी विल कम डाउन. सो हु विल प्रोटेक्ट यू इन दिस केस? The protection you will get in this case will be from your stop loss. Stop loss will protect you from big fail. Stocks can fail. Stop loss will thus protect you in such cases. Following the same process, एक ही चीज को बार बार करते रहना. डिसिप्लिन, जैसे हमने अभी बात की कि ऑफ-स्टंप के बाहर के बॉल को छोड़ना है तो छोड़ना है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है. लस्टरस ऑफ ड्राइव नहीं मारना है, देयर इज नो दो राय इन दैट मैटर. और वो चीज को रिपीट करते रहना है. स्टॉप लॉस हिट हुआ, प्रॉफिट बुक, लॉस बुक किया, ऊपर जा रहा है उसको ग्रो होने दिया. स्टॉप लॉस हिट हुआ, प्रॉफिट बुक किया, जो ऊपर जा रहा है उसको ऊपर जाने दिया. सेम चीज रिपीट करते रहना है. इट विल बी बोरिंग. पैसा बनाना कई बार बहुत बोरिंग काम हो सकता है. अर्निंग प्रॉफिट समटाइम्स you need to do disciplined things, you need to do boring things, you need to maintain discipline, you need to repeat the same things again and again and again and again, but that will help you in making money. आपको बहुत ही कुछ एक्साइटिंग चीज चाहिए तो आप बेटिंग कर सकते हैं, आप हॉर्स पे पैसा लगा दीजिए, आप टेक्सास चले जाइए, बट अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं तो आपको डिसिप्लिन रख के प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा. सेम प्रोसेस जो आपने तय किया, मैंने समझो 8% जहां पे मैं खरीद रहा हूं उसके 8% नीचे स्टॉप लॉस रखा, तो हर बार जब वो 8% का मार्क हिट होता है मुझको उसमें से एग्जिट करके निकल जाना है. कई बार कोई 5% रखता है, कोई 8% रखता है, कोई 10% रखता है.
कोई पर्सन नहीं रखता है स्टॉप लॉस. समटाइम्स पीपल कीप द स्टॉप लॉस एट अ सपोर्ट लेवल फ्रॉम वेयर बाय चांस इफ द स्टॉक फॉल्स उधर से बाउंस होना हो सकता है. सो नेक्स्ट वीक इन द वर्कशॉप, आपने अगर मेरे पिछले वर्कशॉप या वेबिनार अटेंड किए हैं तो सपोर्ट्स और स्टॉप लॉसेस आपने देखे होंगे, लेकिन हम फिर से भी उसको, अगर आप वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं नेक्स्ट वीक, तो वो कहाँ पे स्टॉप लॉस एग्जैक्टली रखना, कितना नीचे रखना आपके बाइंग प्राइस से, वो फिर से एक बार उसको स्टडी हम लोग कर लेंगे. नाउ मूविंग अहेड, money saved through quick exit on a wrong call through a stop loss and letting the correct call grow and trailing it with a trailing stop loss is the best way to make money. Now we are talking about a new term here. The new term is trailing stop loss. तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस मतलब when you buy a stock, you decided, जब आपने एक स्टॉक खरीदा तो आपने डिसाइड किया कि भाई मैं इतना लॉस इसमें सहन करूंगा, या ये सपोर्ट पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूं, इसके नीचे अगर प्राइस गया तो आई विल एग्जिट, राइट? सो दैट विल बी योर स्टॉप लॉस. व्हाट इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मींस, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, यू बॉट अ स्टॉक वर्थ 100 रुपीज. आपने एक 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, ओके? आज वो 110 या 115 रुपया हो गया. That stock eventually grows to 100 or 150. So now what you will do? First thing is to protect your capital. एक टेस्ट मैच में खिलाड़ी का सबसे बड़ा एम क्या होता है कि भाई मैं मेरा मैच ड्रॉ करूं, पहला एम, या मैं मेरी विकेट बचाऊं, पहला एम. So your first thing will be to protect your capital. So if a stock that I purchased on rupees 100 has gone to 110, the first thing I will do is I will take my stop loss. पहले 90 पे था, सपोज मैंने 100 पे एक स्टॉक खरीदा, उसका स्टॉप लॉस मैंने 90 रखा था. Now that stock has become 110. अब वो स्टॉक 110 हो गया. तो मैं क्या करूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस उठा के 100 पे रख दूंगा या 101 पे रख दूंगा, ब्रोकरेज और ये सब मिला के. तो एक बार मैंने स्टॉप लॉस को, जब वो 100 का स्टॉक 110 हो गया और मैंने 101 पे स्टॉप लॉस रख दिया ऊपर जाके, तो क्या हुआ? माय कैपिटल इज प्रोटेक्टेड नाउ. जो मेरा पैसा था, घर का पैसा, वो तो सेफ हो गया, राइट? सो माय कैपिटल इज प्रोटेक्टेड नाउ. द बेस्ट थिंग, अब जब वो 110 का, फॉर एग्जांपल, इट गोज टू 120, उसका भी एक प्रोसेस होता है कहां पे एग्जैक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना. वी विल अगेन डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीक्स वर्कशॉप. सो उसमें मैंने थोड़ा ऊपर उसको 110 120 प्राइस हुआ तो मैंने 110 या 112 या 115 पे स्टॉप लॉस, अब आई ब्रिंग दैट स्टॉप लॉस अबाउट. ओके, सो नाउ आई मेक मनी फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट. जब 120 हो गया स्टॉक का भाव, तब मैं ये माइंड सोच के चल रहा हूं कि नहीं भाई, मेरे लिए तो 115 मिल रहा है, वो बहुत है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 115 है. 115 क्यों? 120 पे मैं पूरा 20 रुपया लेके एग्जिट क्यों नहीं कर जाऊं? Why I don't take the full 20 rupees and exit that stock? वो हम आगे अभी प्रेजेंटेशन में देखते हैं क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा. ओके, आई थिंक एक और क्वेश्चन आया है. Okay. It is saying that before starting Q&A, we will play one more video. No problem. Okay. So money saved. तो ये हम बात कर रहे थे कि जैसे हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस भी हम नीचे से उठा के उसके पीछे पीछे, उसके आगे नहीं, या उसी लेवल पे नहीं, उसके थोड़ा नीचे या कुछ लेवल पे नीचे हम उसको रखेंगे. स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर जा रहा है. स्टॉक ऊपर जा रहा है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर जा रहा है. 140 हो गया 100 का स्टॉक, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 130 हो गया. Our stock has grown to 140, our trailing stop loss has gone to 130. So if something goes wrong, at least that 30 rupees
I will take from the market and go. This is the importance of trailing stop loss. Oh, how and when and why? More details we'll discuss in the next week's workshop. Right now, I will give you the importance of profit booking, when it should be done, why it should be done. ये जो trailing stop loss है, that is part of profit booking. सो हम प्रॉफिट बुकिंग का जब अभी आगे हम देखते हैं और आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में भी बताऊंगा. व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट बुकिंग, एट दैट टाइम आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस and how it is to be used. Okay, so now coming to the next part, which is the most important part, profit booking. Now a lot of people, lot of investors in the last year's bull market on paper made lot of money, but then market corrected and they could not take that money home. Recently the market went up to 8,300 and in 3, 4, 5 days 60 जितना नीचे आ गया 1000 point 1500 point, तो people were not able to take that profit home. So the art of taking home the money you made on paper before it is going to be taken off the table is called profit booking. ये profit booking की मेरी definition है कि प्रॉफिट बुकिंग एक कला है कि जो कला में हम ये सीखते हैं कि कैसे जो पैसा आपने ऑन पेपर कमाया, आपका स्टॉक कैसे 100 का 130 या 128 हुआ, नाउ हाउ टू टेक दैट मनी होम इज एन आर्ट. उस कला को हम प्रॉफिट बुकिंग नाम देते हैं. अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कई लोगों को पूछा है वैसे, कि भाई आप प्रॉफिट बुकिंग करना क्यों चाहते हैं? व्हाई डू यू बुक प्रॉफिट्स, व्हेन डू यू बुक प्रॉफिट्स? तो सबसे इंपॉर्टेंट जवाब, सबसे बड़ा जवाब मुझे क्या मिला है मालूम है? कि भाई मैंने सोचा था 20% इसमें मिलना चाहिए, 20% मिल गया, भाई अपन इसमें से निकल गए. This is the answer that I get. That I wanted to earn 20% from the stock. I earned 20%, so I exited. I made the profit booking. Right? This is the first thing that a lot of people do. I wanted 20% from the stock. When you enter a stock, you enter with a time frame, or you enter with a target in your mind. Okay, I will get 10, 15, 20% in this stock. When I get that amount, I will get out. So that is the number one way in which people do profit booking. Number one reason of people doing profit booking. Now, second reason of doing profit booking is that slight negative fluctuation आ गया प्राइस में. अरे भाई प्राइस 5-6% एक दिन में गिर गया, तो मैंने तो प्रॉफिट बुकिंग कर गया, भाई अपने को रिस्क नहीं लेना है. ये रीजन नंबर 2 है जो lot of people give me. Third reason of booking profit is there is some bad news about the company. Okay, कई बार ये bad news सही होते हैं, कई बार अफवाह होती है. कई जो ऑपरेटर होते हैं वो जानबूझ के ऐसी अफवाह फैलाते हैं मार्केट में, ताकि जब उनको स्टॉक खरीदना होता है तो एक अफवाह फैला दी, तो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, तो उसको स्टॉक मिल गया उस प्राइस पे. ओके, तो इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी लोग कर लेते हैं when they get a bad news about the company. Now the other aspect when people do profit booking is that company is at receiving end of government policy or some macroeconomic change. कि भाई कोविड आ गया तो अभी तो थिएटर नहीं चलेंगे, या लॉकडाउन आ गया तो थिएटर नहीं चलेंगे, तो पीवीआर का स्टॉक बेचो, या आइनॉक्स लीजर का स्टॉक बेचो, या जो शोरूम है बड़े बड़े मॉल बंद हो जाएंगे, मॉल में जो शोरूम है उसका स्टॉक बेचो. राइट? तो इस तरह से कोई बड़ी ऐसी इवेंट हो गई, जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गई, वॉर हो गया, या कोई
सीमा पे तनाव हो गया या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज हुआ, तो उसकी वजह से पीपल, चलो भाई अपने को इतना मिल रहा है, ये अनसर्टेनिटी का माहौल है, पैसा निकल लो, हमारा प्रॉफिट निकाल लो। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल डू प्रॉफिट बुकिंग। नेक्स्ट रीजन इज चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो प्रॉफिटेबिलिटी में जब चेंज होता है कंपनी का, कि भाई पहले प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, अब लॉस मेकिंग कंपनी हो गई। यस बैंक पहले अच्छी बैंक थी, फिर उसका एनपीए बढ़ गया, सो आई एग्जिट दैट कंपनी, राइट। तो जब व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, वी एग्जिट द कंपनी। One more reason why people book profit from a stock is when they come to know that there is some unethical practice going on in the company. कोई डायरेक्टर का नाम आ गया और कोई कंपनी का कुछ गलत काम में, तो फिर एक सेंटिमेंट खराब हो जाता है, और एक खराब होना भी चाहिए। अनएथिकल प्रैक्टिस वाली कंपनी में से तो पहले निकल जाना चाहिए when you come to know that some unethical practice is going on in the company. So these are the points that मैंने सर्वे किया था, तो ये मुझे पॉइंट्स मिले कि लोग कब प्रॉफिट बुक करते हैं। उसमें से 70%, बाकी सब पे 5-5% लोग होंगे, 70% लोगों ने पहला जो पॉइंट था कि भाई मैंने इतना ये टारगेट सोच के चला था और ये टारगेट मिल गया तो मैं एग्जिट कर लिया। दिस इज द मेन रीजन 70% पीपल हैव गिवन मी फॉर एग्जिटिंग अ कंपनी स्टॉक। अब आप में से कई लोगों को पता होगा कि गूगल जो है, यूएस में गूगल कंपनी है जिसपे हम सब जो सर्च करते हैं, गूगल गिव्स आउट लीस्ट डिविडेंड, बहुत कम डिविडेंड या नेग्लिजिबल डिविडेंड। 2012 से पहले तो डिविडेंड देता भी नहीं था शायद, तो उसमें वो डिविडेंड नहीं देता है। Why? क्यों नहीं देता? Because Google does not pay much dividend, because the money earned from Google is best kept in Google to let Google grow and your money grow with it. मतलब गूगल से कमाया हुआ पैसा आप गूगल में ही रखेंगे तो गूगल ही इतना फास्ट ग्रो हो रहा है कि आपका पैसा गूगल के साथ ग्रो होगा। तो आपको डिविडेंड देने का क्या फायदा, जब आपका पैसा मैं बिना डिविडेंड दिए ऐसे ही ग्रो कर सकता हूं। ऐसा गूगल के सीईओ ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था। तो इस तरह से सिमिलरली यू जस्ट डोंट बुक प्रॉफिट फ्रॉम अ कंपनी बिकॉज यू हैव मेड X%। भाई मेरे को इतना परसेंट चाहिए था, मैंने मेरा बन गया तो मैं निकल जाता हूँ। इतना परसेंट मैं सोच के आया था, अभी वो पैसा निकाल के आप कहाँ करोगे, कोई और कंपनी में तो इन्वेस्ट करोगे। लेकिन आपने जहां पे 20% बनाया, अगर वो टेक्निकल लेवल्स ऐसे लेवल पे है जहां से वो नया ब्रेकआउट हुआ है, नया जहां से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, जहां से और ऊपर जा सकता है, जहां से रॉकेट होने वाला है, तो फिर आपका पैसा उसी कंपनी में क्यों ना रखे। 20 का 40% क्यों नहीं बनाए, उसको मल्टीबैगर क्यों नहीं बनने दें। दिस इज द क्वेश्चन आई आस्क लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु बुक अर्ली प्रॉफिट। आपने देखा होगा, many of you must have seen that what happens that oh you thought that 15% is good enough, मैंने 15% इसमें बना लिया टाटा एलेक्सी में, या 20% बना लिया, मैंने तो 1000 रुपए में खरीदा था टाटा एलेक्सी, अब 7500 हो गया, अलग चीज है। मैंने 1000 रुपए में खरीदा था, 1500 में बेच दिया। तो 1500 में क्यों बेचा, जब वो स्टॉक 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, 8, 9, 10,000 भी जा सकता था। Unnecessary profit booking in the companies that are going and growing strong नहीं करना चाहिए। वो मीम एक मुझे याद आ रहा है कि भाई वो सामने लाल बटन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था। कोई एक मूवी में है ना, धमाल में या किसी में, गोलमाल या धमाल में मेरे ख्याल से वैसा है। तो एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग कर लिया टाटा एलेक्सी में से, हाँ सर कर लिया, नहीं करना चाहिए था, अभी तो 5-6 हजार पे जाएगा, 7 हजार पे जाएगा, अभी तो 7.5 हजार पे पहुंच गया, राइट। सो द थिंग इज दैट नोइंग द पोटेंशियल ऑफ द कंपनी is very important. Maybe by not booking profit in a certain company,
you will let your money grow faster. ठीक है, तो ये चीज अभी ये कहां से पता चलेगा कि ये कंपनी में ग्रो होने वाला है मनी फास्टर या नहीं होने वाला है? हाउ विल आई कम टू नो दैट मनी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी इज गोइंग टू ग्रो फास्टर और नॉट? For that, I will have to learn a little bit about fundamentals of the company, about the products. थोड़ा बहुत रीडिंग करना होगा. आप अगेन फिर से ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, स्मार्ट बोनांजा हो गया, स्मार्ट प्लस हो गया, ये सब पढ़ते रहेंगे ना थोड़ा बहुत, तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा स्टॉक का पोटेंशियल ज्यादा है. हमारे पास इतने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं, इतना उनका सालों साल का नॉलेज है, इतना इन डेप्थ एनालिसिस है कि वो आपको सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनी रहने देने की भी सलाह टाइम टू टाइम देते रहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग की भी देते रहते हैं. तो इफ द पोटेंशियल ऑफ योर मनी to grow is there in the company, तो unnecessary profit booking नहीं करना चाहिए. Look at the technical levels. आप देखो, सपोर्ट देखो, रेजिस्टेंस देखो, चैनल देखो, कौन सी चैनल में चल रहा है, तो ये चैनल कहाँ जा रही है, तो ये कहाँ जाएगा, चैनल टॉप कहाँ पे है, ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. We will see about the channels. हम आगे की स्लाइड्स में ये जो चैनल के बारे में भी हम देखेंगे, चैनल टॉप, चैनल्स, चैनल क्या होता है वो अभी हम देखेंगे इसके बाद. ओके, तो ये सब चीजों के आधार पे यू शुड बुक प्रॉफिट इन स्टॉक्स. नाउ इफ द कंपनी, कोई कंपनी है उसमें कुछ एथिकल, कुछ ऑनेस्टी रिलेटेड या एथिकल क्राइसिस अगर आपको दिख रहा है या न्यूज़पेपर में आ गया है, तो यू नो इन दैट केसेस अगर आप और उस कंपनी में आप प्रॉफिट में बैठे हैं, तो इन दैट केस डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट बुकिंग मत करो, कभी ऐसी जगह पे मत करो जहां पे आपका पैसा और ग्रो होने के चांस. अगर आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया लेकिन आपको लग रहा है कि ओ इसमें तो अभी कोई मैनेजमेंट के डायरेक्टर की कुछ सांठगांठ है या कुछ गड़बड़ी हो गई या कुछ न्यूज आ गया या उसकी गिरफ्तारी हो गई या कुछ उस पर एलिगेशन आ गया है, तो एथिकल सिचुएशन में, एथिकल क्राइसिस है, तो आप जरूर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए. इफ फॉरवर्ड अर्निंग्स ऑफ द अकाउंट ऑफ दैट कंपनी और अकाउंट बुक्स ऑफ दैट कंपनी आर नॉट मैचिंग वैल्यूएशंस, कोई कंपनी 100 के पीई पे चल रही है, राइट? पीई आपको पता होना चाहिए, पीई क्या है, प्राइस टू अर्निंग्स. एक जो कंपनी का अर्निंग होता है उसके कुछ मल्टीपल्स में 17, 18, 19, 20 टाइम्स, कोई 100 टाइम्स, कोई कंपनी 200 टाइम्स भी उसके प्राइस के मुकाबले चलती हैं, राइट? तो प्राइस टू अर्निंग के मुकाबले चलना ठीक है, 50, 15, 20, आइडियली 15 के नीचे, 15 के ऊपर जो होते हैं उसको हम हाई पी बोलते हैं. आज के जमाने में 20 के ऊपर हाई पी बोलते हैं. इट इज योर पर्सनल दिस थिंग कि आप कौन सी कंपनी को, कौन से स्टॉक को हाई प्रॉफिट, हाई पी मानोगे. ओके, इस पे हम एक और पूरा एक वर्कशॉप और पूरा एक वेबिनार सिर्फ ये वर्ड पीई, प्राइस टू अर्निंग पे हो सकता है, तो इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे ज्यादा. बट जो बहुत हाई पी पे चलती हैं कंपनियां, उनकी अकाउंट बुक्स, उनके रिजल्ट आपको खास, अभी देखो रिजल्ट की सीजन चल रही है, रोज किसी ना किसी का रिजल्ट आ रहा है, राइट? तो यू शुड ऑलवेज हैव अ लुक एट किसका रिजल्ट क्या, कब, कैसे, कितना आ रहा है. उसका फॉरवर्ड अर्निंग से बोलते हैं कि भाई, वो नहीं बोलते कि भाई 2000, अभी तो ये रिजल्ट आया 2021 अक्टूबर के क्वार्टर में, बट हमारा 2023 के अक्टूबर के क्वार्टर में ये रिजल्ट आएगा. फॉरवर्ड अर्निंग्स, कंपनियां अपने आगे क्या मुनाफा होने वाला है, आगे क्या प्रॉफिट होने वाला है, ये भी उनको बताना पड़ता है, ये भी बताती, उस पर भी नजर रखो. और उसमें इफ देयर इज अ मिसमैच बिटवीन वैल्यूएशन एंड द फॉरवर्ड अर्निंग्स, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो. थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा,
थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, ज्यादा स्टडी नहीं करनी है, इफ यू डोंट वांट टू डू बिग रिसर्च, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी बिग थिंग्स, at least what you can do is you can read the expert columns written by some fantastic writers of Smart Investment, Smart Plus, Smart Bonanza और Smart Plus में तो मैं भी लिखता हूँ, इतना बड़ा एक्सपर्ट शायद नहीं हूँ, फिर भी लिखता हूँ और काफी रिसर्च करके लिखता हूँ। तो ये सब पढ़ने से आपको एक स्पून फीडिंग मिल जाएगी। एक किसी का बनाया हुआ, वो बोलते हैं ना, मोढ़ामा कोड्यू राखी दी तो गुजराती में बोलते हैं, वो करके दे रही है। और मैं सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं उससे एसोसिएटेड हूं, ऐसी बात नहीं है। मनी कंट्रोल हो गया और काफी हो गया, CNBC हो गया, जी बिजनेस हो गया, ये काफी सारी जगह पे काफी अच्छा रिसर्च होता है। शेर खान का रिसर्च हो गया, HDFC का रिसर्च हो गया, ये लोग बहुत अच्छा रिसर्च करके बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन देते हैं। इट विल बी अनफेयर मैं सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का नाम लूंगा तो, या स्मार्ट प्लस का नाम लूंगा तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह है जहां से आपको ये सब इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाएगी। आपको वैसे अगर ये 500 पेज की बुक पढ़नी है, राइट, बट टू एक कंपनी का रिजल्ट स्टडी करने के लिए, लेकिन वो 500 पेज की बुक आपको 5 पेज में या 5 पैराग्राफ में कोई राइटर बेचारा मेहनत करके आपको लिख के दे रहा है, तो एटलीस्ट आप वो 5 पैराग्राफ पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा ओ इसका फॉरवर्ड अर्निंग में तो प्रॉब्लम है बॉस, ब्रिटानिया में एग्जिट हो जाना चाहिए 2020 की दिसंबर में मैं बैठा हूं तो, क्योंकि 2020 के दिसंबर से करीब करीब अभी तक ब्रिटानिया वहीं का वहीं खड़ा है, शायद थोड़ा कम हुआ, ज्यादा नहीं हुआ होगा, राइट। ये सब डेटा, ऑल दिस डेटा यू विल गेट बाय इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट, मनी ग्रो करना है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट आपको आपका टाइम भी करना होगा, थोड़ा बहुत स्टडी करने में उस कंपनी के बारे में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, फिर कई बार मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं? जैसे हमने कुछ देर पहले बात की थी कि भाई कोविड आ गया, तो उस पर क्या कोई कर सकता है, तो उसकी वजह से काफी इंडस्ट्रियों का काफी कुछ चीजें चेंज हो गई, राइट। तो आपको यू हैव टू टेक योर प्रॉफिट बुकिंग कॉल्स अकॉर्डिंगली। मार्जिन प्रेशर है कोई कंपनी पे, अगर उसका सेल्स कम हो रहा है कोई कंपनी का, तो वो कम मार्जिन पे भी बिजनेस करेगा, कम मार्जिन पे बिजनेस करेगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी। प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हुई तो उसके रिजल्ट पे इंपैक्ट होगा, रिजल्ट फिर जब उस क्वार्टर का आएगा तो उसके प्राइस कम होंगे वो शेयर के। तो ये अगर आपको पहले से पता है तो आपने एटलीस्ट 50% या 25% या 30% प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए उस स्टॉक में से, या 100% प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना चाहिए। वो गुजराती में कहते हैं ना, पानी आवता पहला पाड़ बांधी लेवी, बिफोर द वाटर एंटर्स योर फील्ड एंड डिस्ट्रॉयज इट, यू मेक अ वॉल, brick wall to stop that water influx in your field. Okay, तो ये ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, न कि उस लिए कि भाई मेरे को मेरा 15% मिल गया, भाई अपन खुश है, अपन इसमें से एग्जिट कर रहे लाए। ऐसा मत करो, थोड़ा रिसर्च करो, क्योंकि जिसमें से आप 15% बना के निकल रहे हो, शायद उसी में से आप 150% बना के निकल सकते थे, या 150% या 1500% भी। मल्टी बैगर किसको बोलते हैं? मल्टी बैगर ऐसे ही तो बनते हैं या और बढ़ते हैं कि हम लोगों ने उस कंपनी में अपना पैसा बढ़ने दिया। थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना भी कभी कभी ठीक होता है। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज की एडवर्स इफेक्ट होती है कंपनी पे। कंपनी ने समझो फॉर एग्जांपल कोई एपीआई के रिलेटेड, या ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानी है कि भाई कंपनी ने चाइना का ये रुक जाए, उसके लिए एक्स कंपनी पे बैन लगाया।
उसके लिए वाई कंपनी का स्टील का प्रोडक्शन सफर हो गया और उसकी वजह से वाई कंपनी के प्राइस गिर गए, राइट। एनवायरमेंटल कोई इश्यू फ्रांस में हो गया, फ्रांस ने कुछ वो कर दिया कि भाई कोयला पे ये करो, कोयले पे इंडिया भी वो एग्रीमेंट में है तो इंडिया को भी कोयला कम करना पड़े, तो कोल इंडिया का प्राइस कम हो गया। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, गवर्नमेंट फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से भी कई बार क्या होता है कि एडवर्स इफेक्ट हो जाता है इंडस्ट्री पे। तो एडवर्स इफेक्ट होने वाला है ऐसा अगर आपको लगता है और आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं तो यू शुड बुक प्रॉफिट, एटलीस्ट बुक 50% प्रॉफिट। आपका इन्वेस्टमेंट का इनिशिएटिव कम कर दो, कॉस्ट कम कर दो आपके स्टॉक की बाय एवरेजिंग आउट, बाय बिकमिंग ऑलमोस्ट लाइक जीरो इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। कि मैंने कोई 100 रुपए में स्टॉक खरीदा, ओके, मैंने 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा, 100 स्टॉक, अभी मैं 50 स्टॉक 200 रुपए में बेच देता हूँ, तो मेरे तो बाकी 50 स्टॉक भी फ्री हो गए ना। फिर वो फ्री हो गया, वो उसको रहने दो, एक बार प्रॉफिट बुक कर ली मैंने जितनी करनी थी, मेरा कैपिटल सेव हो गया, अब मैं उसको रहने दूं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से स्मार्टली प्रॉफिट बुकिंग करना है। एग्जैक्ट कौन से लेवल पे अगर आपको रिस्क फ्री प्रॉफिट बुकिंग करना है कि भाई ये लेवल आया 25% प्रॉफिट बुक करो, ये लेवल आया 50% प्रॉफिट बुक करो, ये लेवल आया 75% प्रॉफिट बुक करो, एंड इफ इट हिट्स दिस लेवल आई विल एग्जिट द कंपनी। इफ यू वांट टू लर्न दिस थिंग्स, एकदम फाइन फाइन चीजें पकड़नी है, तो फिर आपको नेक्स्ट वीक का वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा। उसमें हम आपको लेवल देंगे, कहां पे कैसे क्या एग्जिट करना कौन से स्टॉक में से। कुछ और चीजें हैं, देयर आर सम मोर स्क्रीनर्स which I will discuss, which will help you in booking profit in the stocks that you are making money. कुछ चीजें आपको क्या देखनी चाहिए, some things that you always need to look at or look for are what are mutual funds doing? Are they investing in this company or are they selling in this company? What is domestic investors doing in this company? Are they investing more? Are they LIC क्या कर रहा है? हाँ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जैसे कि भी राकेश झुंझुनवाला क्या कर रहा है, रामदेव अग्रवाल क्या कर रहा है, इसमें से निकल रहा है धीरे धीरे एक एक आधा आधा % करके, या ही इज एडिंग। FIIs क्या कर रही है? If all these are decreasing holding in a company, then you should also book profit in the company. Another important factor is if promoter is decreasing his holding in that company, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जब प्रमोटर खुद ही, जैसे ना रिसेंटली TCS बायबैक कर रहा है। बायबैक का मतलब क्या है कि दे आर इंक्रीजिंग स्टेक इन द कंपनी, वो अपने ही कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। तो अपनी कंपनी में अपना हिस्सा कौन बढ़ाता है? जिसको मालूम है कि भाई मेरी कंपनी तो बहुत आगे जाने वाली है, बहुत ऊपर जाने वाली है, तभी तो वो अपना हिस्सा बढ़ाता है अपनी कंपनी में, राइट। कोई दान दक्षिणा करने तो बैठा नहीं है, सब बिजनेसमैन है कि भाई 3800 के शेयर का आपको 4500 दे रहे हैं तो बहुत खुश, आप लोग ने हमारे शेयर लिए भाई, बहुत मुझे खुशी है, आप ये लो 700 रुपए एक्स्ट्रा पकड़ो। nobody is that silly, right? Everybody is doing buyback because they think that net worth is much more or their share price will be much more in coming years. तो अभी आपसे 3800 का शेयर 4500 में खरीद रहे हैं, बराबर है, तो उसका मतलब है उसके शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, ये प्रमोटर को पहले पता होती है, राइट। नाउ अगर कोई प्रमोटर बेच रहा है कोई कंपनी के खुद के ही शेयर, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब प्रमोटर को ही सबसे पहले पता चलता है। इट इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ टीसीएस का एग्जैक्टली रिवर्स हो रहा हो कि प्रमोटर इज सेलिंग हिज शेयर इन द ओपन मार्केट एट द करंट प्राइस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Meaning of that might be that there is something, the result of next quarter or next year is not going to come good. तो 200 का शेयर 150 या 100 होने वाला है, तभी वो एग्जिट कर रहा है उसमें से, राइट। सो इन दिस केस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो कि आप प्रॉफिट में बैठे, आप उसमें एग्जिट कर जाओ।
कैश फ्लो इज अनदर थिंग दैट यू शुड सी कि भाई कैश फ्लो उस कंपनी का बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है कुछ फैक्टर्स की वजह से। तो अगर कैश फ्लो किसी कंपनी का कम हो रहा हो या इफेक्ट हो रहा हो ना, तो उस कंपनी के फिर शेयर के प्राइस ज्यादातर केस में गिरते हैं। तो कैश फ्लो भी आपको देखना चाहिए। इफ कैश फ्लो इज गेटिंग लेस or is getting affected due to some management issue, या due to some account book related issue, या due to the interest of that company going in मतलब उसने जो उधारी ली उसके इंटरेस्ट में जा रहा है कैश फ्लो काफी, तो आपको थोड़ा उसमें सचेत रह के यू कैन बुक प्रॉफिट इन दैट कंपनी। मार्जिन प्रेशर है, अभी देयर इज ह्यूज इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन ह्यूज है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर या XYZ कंपनी, ब्रिटानिया और नेस्ले कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस, तो क्या होता है, तो उस पर मार्जिन प्रेशर आएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं हाइपोथेटिकल खाली, मार्जिन प्रेशर आएगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हुई तो वो शेयर का प्राइस डिक्रीज होगा, शेयर का प्राइस डिक्रीज हो गया तो ऐसे शेयर को पकड़ के रख के क्या फायदा, प्रॉफिट बुकिंग कर लो उसमें। हम आप ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हो, एटलीस्ट 25%, 30%, 40% प्रॉफिट बुकिंग कर लो उसमें, देन इट फिर उसी शेयर का कम आपको बहुत यकीन नहीं, अगेन नाम में ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, नहीं नेस्ले तो अभी 18,000 का है लेकिन उसको तो 25,000 जाना है, तो मैं नहीं बेचूंगा ठीक है, लेकिन 18,000 का बाद में अभी आपने बेच दिया, 16,000 में जब आया तब वापिस खरीद लिया, तो 2,000 रुपए का भी फायदा तो आप ही को हो रहा है, आपके पोर्टफोलियो को ही हो रहा है, राइट। यू आर गेटिंग द बेनिफिट of selling it at higher price and again purchasing the same stock at lower price. You can do that. That is also a kind of profit booking. Again, there are integrity issues of the company. कोई कंपनी के कुछ इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कुछ ये इश्यू हो गया, या उनके कुछ गलत न्यूज आ गए कि टीम मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, MD, चेयरमैन के बारे में कि भाई ये करप्ट है या डिसऑनेस्ट है, तो ऐसी टाइम पे ऐसी कंपनी में अगर आप प्रॉफिट में बैठे हो तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स पे जो सपोर्ट है उससे EMA है, मदर फादर चिल्ड्रन वाला, आपको सबको याद होगा एग्जांपल, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में और बता दूंगा। तो वो बच्चा मम्मी और डैडी से बहुत दूर है तो एक बार तो घूम के आने वाला है, टेक्निकल चार्ट्स पे, टेक्निकल सपोर्ट पे बहुत दूर है सपोर्ट से, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग उसमें किया जा सकता है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं, इफ दे आर इंक्रीजिंग द प्लेजिंग, वो गिरवे रख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा स्टॉक गिरवे रखते जा रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन बुक प्रॉफिट इन दैट कंपनी। अगर कंपनी का डेब्ट यानी उधारी बढ़ती जा रही है तो ऐसी कंपनी के प्राइस भी आप ऐसी कंपनी के स्टॉक के प्राइस में अगर आप प्रॉफिट में बैठे तो आप बेच सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स वन शुड कंसिडर while booking profit, not book profit because I made 15% अपने को अपना मिल गया, भाई मैं तो 15% के टारगेट से आया था तो मैं निकल जाऊंगा, not that. You should look at these factors for booking profit. Now जो what I said short while back के प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी चाहिए, तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये जो स्टॉक का प्राइस है, कैंडल स्टिक का पैटर्न है, उसको आप एक बच्चा समझो, थिंक दैट दिस प्राइस इज एक मदर फादर और एक चाइल्ड है, वो गार्डन में घूमने के लिए चले गए, तो गार्डन में जैसे ही घूमने गए वैसे वो बच्चा क्या करेगा, 3 साल का बच्चा हे करके भागेगा मम्मी डैडी से दूर, वैसे ही ये स्टॉक का प्राइस को समझो जो मम्मी डैडी से दूर भाग रहा है। तो एक टाइम पे जब वो मम्मी डैडी के बहुत दूर आ गया ना, फिर वो एक बार मम्मी 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 करके एक बार उसके पास आएगा, वापिस थोड़ा दूर जाएगा, वापिस पास आएगा, वापिस दूर जाएगा, वापिस पास आएगा। समझो इधर एक कुत्ते ने उस पर भौंक दिया भाव 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 गार्डन में, तो वो डर के मम्मी के भी पल्लू के नीचे छुप जाएगा और डैडी के भी पल्लू के हाथ पकड़ लेगा, डैडी डैडी वो कुत्ता। हाँ, तो वो उस टाइम पे जब ये प्राइस गिर रहा है
तो समझो वो मम्मी के पल्लू के नीचे आ गया, तो यू कैन एग्जिट दैट स्टॉक। और पिताजी के पल्लू के नीचे आ गया तो फिर और उसके और नीचे जा रहा है, तो वो तो और भी करेक्ट टाइम होगा वो स्टॉक को एग्जिट करने के लिए। ये देखो इधर क्या हुआ, ये डर गया कोई रीजन से, जंप मार के मम्मी और डैडी दोनों के नीचे, पल्लू के नीचे आ गया। कौन सा स्टॉक है? HDFC एसेट मैनेजमेंट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एसेट मैनेजमेंट में। लेकिन वो कुछ चीज से ऐसा डर गया कि वो जंप मार के मम्मी और डैडी दोनों के पल्लू के नीचे आ गया। अभी वो स्टॉक का क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो। अभी ये 2 पॉइंट के अलावा भी 1-2 पॉइंट है, जो मदर फादर चाइल्ड वाली स्टोरी है ना, वैसे ही एक और स्टोरी मैं बताने वाला हूं अगले वीक। तो वो जानने के लिए तो आपको अगले वीक ज्वाइन करना होगा। एक और हम एग्जांपल देखते हैं कि जी एंटरटेनमेंट, देखो बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट अभी वो इधर क्या हुआ है कि मम्मी की छत्र छाया के नीचे ऑलरेडी आ गया, 50 EMA के नीचे ऑलरेडी आ गया है। तो अभी इधर सतर्क हो जाना है, या 25, 30, 50% प्रॉफिट इधर बुक कर लो और वेट करो क्या वो इधर से वापस जाता है फादर का सपोर्ट लेके, या फादर के भी नीचे आ जाता है। अगर फादर के भी नीचे आने लगे और एक सपोर्ट इधर है उसके भी नीचे जाने लगे, तो 100% प्रॉफिट बुक कर लो। फिर क्या फायदा वो स्टॉक को रखने का, क्योंकि फिर ये जो सपोर्ट होता है, गंगाधरी शक्तिमान है, बराबर है। तो जो अभी सपोर्ट है वो ही रेजिस्टेंस बनेंगे। अभी ये मम्मी उसके रेजिस्टेंस बन जाएगी, फिर पापा उसके रेजिस्टेंस बन जाएंगे, फिर ये उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जो अभी सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो ये सब, और सबसे बड़े सपोर्ट और सबसे बड़े रेजिस्टेंस 50 EMA और 200 EMA है। biggest support and biggest resistance is 50 EMA and 200 EMA, right? Now if the stock is below 50 EMA and 200 EMA, then it is very clear that it is going to face major issues. So at that time, in those stocks, you can book profit at those levels. 25% इधर किया, 25% इधर किया, बहुत अच्छा पसंद है स्टॉक, तो 50% पकड़ के रखा, right? If you like the stock so much, you can keep 50%, remain 50% invested in the stock. Another example, Lupin Limited. What was happening? It was going good, but then it came under the 50 EMA, मदर के नीचे आ गया, फिर और डर गया था कुछ चीज से, it came below father EMA, 200 EMA. Now what happens? It is not able to cross these two. तो इतना टाइम हो सकता है हम किसी और कंपनी में पैसा लगा देते, लुपिन अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, बट वो इतना नेगेटिव हो गया है, तो वो पैसा यूज करो ना कोई और जगह पे। फिर ये जब मम्मी और पापा के ऊपर आ जाएगा, when it will come above 50 and 200 EMA, you can re-enter that stock if you like it so much. Correct? So this is how you can book profit at different levels. अगले हफ्ते हम आपको ये जो स्टोरी मम्मी पापा चाइल्ड वाली स्टोरी है, उसमें 2-3 और कैरेक्टर ऐड करेंगे, 2-3 रिलेटिव या 2-3 ऐसे कोई ऐड करेंगे, और वो एग्जैक्टली कब 25% बुक करना, एग्जैक्टली कब 50% बुक कर देना, 75% बुक कर देना, और 100% कब बुक कर देना, वो एक एग्जाम्पल से आप सीख लेंगे नेक्स्ट वीक वर्कशॉप में। प्रॉफिट बुकिंग परफेक्ट कब कैसे कहां करनी है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन बुक प्रॉफिट। एक और एग्जांपल जाते जाते देख लेते हैं। बजाज कंज्यूमर वाज गोइंग वेल, बट देन कुछ चीज से डर के मम्मी के पल्लू के नीचे आ गया, और डरा पापा के पल्लू के नीचे आ गया। अभी देखो बजाज कंज्यूमर इतनी अच्छी कंपनी, पोर्टफोलियो स्टॉक, वेयर इट इज राइट नाउ। तो इफ आई वुड हैव बुक्ड 25% प्रॉफिट ओवर हियर, and if I would have booked 25% profit over here, I would have saved lot of money, right? Yeah, suppose I made an entry at 179, now it is again back at 179. What if I would have made some profit booking at 275? What if I had made 100% profit booking at 250 here? Then at 179, or when it starts bouncing from here at 180, वही बजाज कंज्यूमर का मैं सपोज 1000 स्टॉक थे, तो मैं 1500 खरीद पाऊंगा उसी पैसे से, राइट? सो कैश, having cash in hand is also a position. Book profit, let the stock settle down at the bottom, let it bounce from the bottom, again buy the same stock if you are so much interested in that particular stock.
So this is how you do profit booking. And this is the webinar, that workshop that we are going to have next week. Profit booking levels with the help of technicals and use of parallel channel tool to set the targets. अभी what is a parallel channel? तो उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि like the water in a dam flows in a canal, डैम से जो पानी निकलता है वो कैनल में फ्लो होता है ना. Similarly, the stock prices also move in a channel. We can estimate future targets both on upside and downside based on the particulars of the technical levels of the channel. We will see in the next slide how that channel looks like. Okay. Next week in the workshop, we'll learn how to draw these channels. Actually, हम draw करके दिखाएंगे और आप भी साथ में पैरेलली ट्रेडिंग व्यू खोल करके उसमें लॉगिन आईडी क्रिएट करके बैठ सकते हैं. तो आप भी मेरे साथ, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे ये पैरेलल चैनल ड्रॉ करनी है और आप कैसे ये चैनल के बेस पे हाउ यू कैन सेट टारगेट्स एंड ड्रॉ दिस पैरेलल चैनल इन योर चार्ट. ये पैरेलल चैनल समथिंग लुक्स लाइक दिस. ओके, सॉरी, I think the window closed. Sorry. Okay. There is a question regarding TCS promoters. मैं उसका जवाब दूंगा. ये हम टॉपिक एक खत्म कर लें चैनल वाला, उसके बाद हम उस पे बात करेंगे. ओके, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है. तो what we would request everyone is to create those who are joining the next week's workshop, you need to create a login ID in TradingView, and if possible, you should sit with laptop, with access to laptop, and I will teach you how to draw these parallel channels which we saw just now in another chart. Some examples of channel we will see now. You look, this is the channel of Polyplex. Polyplex company का नाम सुना है ना आप लोगों ने? तो बहुत अच्छा डिविडेंड देती है. तो Polyplex, it goes to the bottom of the channel, then it travels, it faces a mid channel resistance, then it goes above mid channel, again comes down, takes support at mid channel, and then again goes to the channel top, again tries to go to the channel top, channel mid में support लेके again it goes to the channel top. So continuously price of this stock is traveling in this channel. How to make these channels, I will teach you in the next week's workshop. Another example of another channel, which is this stock. This stock is, I'm sorry. This is Reliance Industries, one of our favorite stocks. So Reliance Industries is also traveling in a channel. See, it is here at channel top. Again, it goes to the mid channel. Mid channel, say it is taking support, and it is going to the channel top. Again, then it is falling. It is going below mid channel. Then this mid channel line is also resistance. It is not allowing Reliance stock to grow up. But then big volumes come and it helps it go above mid channel. But then it again comes down, again goes up, travels in the channel, goes to channel top. From channel top, it will go to channel bottom. From channel bottom, where will it go? Slowly, 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 it will go to channel top. Channel top पे कहाँ जाएगा? उसका क्या टारगेट होगा? फिर 3000, राइट? तो इस तरह से आप ये चैनल ड्रॉ करेंगे. चैनल से टारगेट को आपका पता चलेगा और चैनल कैसे बनानी है, क्यों बनानी है, कब बनानी है, कौन से टाइम फ्रेम पे बनानी है. All these things, how to make a channel, why to make a channel, for what make the channel, all these things we will learn in our workshop next week. In addition to profit booking वाला तो है ही, वो नए कैरेक्टर तो मैं दूंगा ही, वो मदर फादर चिल्ड्रन टाइप के easy to understand characters that I will give 100%. And in bonus you will learn how to make this channel and how to use this channel and what is the significance of this channel, and ये channel से हमको क्या तारण निकालना है, what to deduce from this channel, how to
make judgment based on this channel. This thing I will teach you next week. So again, one more example, final example, Bata India. Again, this stock is traveling in this channel. See, from channel top to channel bottom to channel top, again channel top to channel bottom. And now from channel bottom, where it will go? Obviously to the channel top. Where is the channel top? Here. So that will be the target. लेकिन ये बनाना कैसे है? कहाँ पे टारगेट आएगा? कब? कैसे? कहाँ? क्या उसकी width होनी चाहिए? कैसे बनाना? All these things we will learn in the next week's webinar or next week's workshop, along with profit booking and trailing stop loss levels. So I hope all of you who are present here today will join the next week's webinar workshop. It is going to be very, 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 very exciting. And now we will discuss about what all things we will learn in the next week's workshop. Once again, profit booking levels other than 50 and 200 EMA तो है ही जो हमने आज सीखा कि 50 EMA के नीचे आए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, 200 EMA के नीचे आए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लो. But there are other levels than these levels we will discuss next week. We'll introduce 4 more characters for the purpose of profit booking to make it simple. कोई jargon हम यूज नहीं करता हूं मैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मदर फादर सन इसी टाइप के एग्जांपल देके, क्रिकेट के एग्जांपल देके मैं चीजें सिखाने की ट्राई करता हूं. तो आप जानते हैं जिन्होंने मेरे पहले वेबिनार और वर्कशॉप अटेंड किए हैं, राइट? तो उसी तरह से बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम प्रॉफिट बुकिंग करना सीखेंगे. We'll also learn where exactly to put trailing stop losses on support and resistance. We'll learn how to draw these parallel channels, and we will also practice some of the parallel channel drawing. 2-3 हम लोग 5-6-7 भी parallel channel draw कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं अगर टाइम मिले तो. But participants will be shown practical use of this tool live on TradingView. अगर आप भी TradingView पे लॉग इन करके बैठते हैं तो आप भी मेरे साथ वो चैनल ड्रॉ कर पाएंगे, जिससे आपको आगे का टारगेट या कोई चैनल नीचे जा रही है तो नीचे का टारगेट भी मिल सकता है. तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू एनरोल फॉर द वर्कशॉप विच इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट वीक. बहुत ही मामूली रजिस्ट्रेशन फीस है. दिस वी नीड to take to ensure that सही लोग जो इंटरेस्टेड लोग हों वो पार्टिसिपेंट बने. एंड आई थिंक आई विल thank you all for being present today and listening to me for such a long time. और अब हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. हेत यू कैन टेक ओवर नाउ. और अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे. And you guys can ask me your question. Sir, then why TCS promoter are going to participate in the buyback? किरण नायक जी का क्वेश्चन है. किरण नायक, आपको क्या लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा स्टॉक जो है 4,500 पे हम खरीदेंगे. मैं तो पैसे बनाने के लिए खरीदता हूं. तो it will go, maybe it is going to 5,500, 6,000 in future. तभी तो मैं 4,500 में आज खरीदूंगा तो मेरे लिए फायदा होगा. सब प्रमोटर अपने फायदे की ही सोचते हैं. टू हैव बेटर कंट्रोल ऑफ देयर कंपनी. In order to have better control of their company, in order to make more money, they need to have more shares. तो आज 4,500 पे खरीदा, कल उसका प्राइस 6,000 हो गया तो प्रमोटर को उसका फायदा मिला. वेरी सिंपल. Yes, now we can take more question and answers, and it is up to you. Heth? Yes. Okay. So before moving towards question and answer, just we will have a small another video for Yes, 2 to 3 okay. minutes. So I will be sharing the screen for the same. Okay. उसके बाद ये वीडियो के बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं गाइस. Yes. Boss.
Hello. Yes. Yes. So I guess many of you might have got why we are showing this video. The reason behind this video is simple that even if you missed out our past workshops or you want to catch up those workshops once again, then you can go to our website. Simply go to tab of webinars. In that you will find past workshops, and from there you can make a payment and get the recording of our past workshop. As we said earlier that there was a workshop accompanied by webinar by Mr. Vishal Baliya himself. So if you want to get to know what he said and what was the mother, father and son example and all other examples which attracted many persons' mind also. So you can get from there. And just a small explanation how the workshop registration will go so far in our website. So we have already shared the link. Once more, we will be sharing the link. You just simply click on the link. You will be taken to the website page. Over there, click on register, fill out all the details. If you are not a registered person in our website, and if you already are registered, then you will be directly taken to the payment gateway, and from there you can do the payment. Once the payment will be completed, the dashboard will be created. In that dashboard there will be my workshop below the subscribe or renew part. In that my workshop you will find the name of workshop whichever you have subscribed for, and over there will be a fee size button. So for attending the workshop, means getting the Zoom link, you just have to click on that fee size button, and once the workshop is over, within 24 hours the recorded session will also be uploaded on that same part. So instead of the link, you will find over there our recorded session. So this is how our process goes on for past workshop as well as for upcoming webinars and workshops. So that was all from my side. Once again, continuing towards the question and answer round. So handing over to you, Mr. Vishal uncle. Thank you, Heath. So Kiran Nayak, I think I answered your question regarding TCS, why they want to buy back. So they want to buy back because they feel that they will make more money having these shares of the company. फिर तौकीर उस्मानी जी, just now your question was answered by Heath. आपको recorded session मिल जाएगा, आपको उसी तरह fees pay करनी है जैसे Heath ने बताया. You can further contact Heath for the details. मोबाइल नंबर उनके हैं स्क्रीन पे. Please give your opinion about SBI and HDFC Bank. SBI, HDFC Bank, some of the best banks in India, or future very bright, very, very good long-term investment options. Sir, should we buy back TCS at current level and tender in buyback offer for short term? जी कर सकते हैं, बट उसमें एक ही चीज देखनी होगी बंसल जी कि वो कितने % का बायबैक आता है. समझो आपके पास 20 शेयर हैं तो हो सकता है वो 10 शेयर का बायबैक ले या 15 शेयर का बायबैक ले, या कितने शेयर का बायबैक आता है उसके हिसाब से दे विल टेक शेयर्स फ्रॉम यू. जितने हैं सबके सब शायद हो सकता है वो लोग नहीं लेंगे आपसे. तो एग्जैक्ट परसेंटेज बायबैक का मुझे आइडिया नहीं है कितना है, और वो जरा आप चेक कर ले या उसका इंफॉर्मेशन आने के बाद यू कैन मेक योर डिसीजंस. बट टीसीएस एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी लेवल पे आप ले सकते हैं. अगर बायबैक में आपका नहीं गया तो भी आपको मेरे हिसाब से ज्यादा नुकसान या नहीं होगा, फायदा ही होगा टीसीएस का शेयर खरीदने में. Then Mr. Rakesh Patel has asked a very long question. Okay, sir, I am lost in Tidewater, LIC Home Finance, Amara Raja, car trade. What are your suggestions? इतने सारे क्वेश्चन तो मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा आंसर, बट हाँ अमारा राजा बैटरीज और होम फाइनेंस, LIC होम फाइनेंस, ये लॉन्ग टर्म, दीज टू आर वेरी गुड शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म. बाकी का मुझे चार्ट देख के और फाइनेंशियल एनालिसिस करके पता करना पड़ेगा कि क्या लेवल पे क्या है. एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन हम लोग लेंगे एक आदमी से ताकि सबको क्वेश्चन पूछने का मौका मिले. हम कुछ चार्ट भी देखेंगे, कुछ आपने जो बताया उसमें से एक आध कोई स्टॉक का मैं चार्ट भी अभी आपको लाइव दिखाऊंगा. किशोर जी हैज आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, कि what do interpret when 50 EMA falls below 200 EMA?
मतलब वो फादर मदर चाइल्ड जो है, उसमें फादर तो डर के मारे मम्मी के पल्लू के नीचे आ गया, अभी मम्मी भी डर के मारे, इतना बड़ा कोई गुंडे टाइप का आदमी आ गया है कि मम्मी भी डर के मारे फादर के पीछे छुप गई है। तो मतलब नाउ दैट 50 EMA इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जब मम्मी खुद ही डरी हुई है और मम्मी खुद ही फादर के पीछे छुप गई है और बच्चा मम्मी के नीचे है, तो वो कितना ज्यादा वो मम्मी प्रोटेक्ट करेगी वो बच्चे को, राइट? सो दैट इज इवन मोर डेंजर सिचुएशन फॉर दैट स्टॉक. I hope I answered you, Kishore ji. The next question is 50 and 100 EMA work for intraday or we choose any other EMA for intraday. सर वो हम लोग नेक्स्ट वीक में उस पे आगे डिटेल में बात करेंगे, नेक्स्ट वर्कशॉप उसी पे है. Is there any tracker sheet which dynamically shows EMA levels like Google Sheet? I don't know about it, but you can draw them very easily, Mehul ji. ऑन tradingview.com पे आप जाके कोई भी स्टॉक खोल के उसमें आप EMA कैसे बनाना वो आप आराम से सीख सकते हैं. माय पास्ट वर्कशॉप ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाज आल्सो ऑन द सेम टॉपिक, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट विद द हेल्प ऑफ हेत, और आप यू कैन वॉच दैट. इन दैट आई हैव शोन हाउ टू ड्रॉ दिस सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस एंड हाउ टू गेट दिस EMA लाइंस ऑन योर चार्ट. शीट्स जरूर कोई ना कोई होगी, मुझे आइडिया नहीं है शीट्स के बारे में. सर प्लीज गिव योर ओपिनियन SBI एंड HDFC बैंक और बैंकिंग सेक्टर इन व्यू ऑफ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी. विल क्रिप्टो करेंसी इफेक्ट बैंकिंग सेक्टर? भाई अभी तो क्रिप्टो करेंसी खुद ही इफेक्टेड है, 68,000 से 34,000 के नीचे आ गई है. किरण जी प्लीज अनम्यूट मी. ओके जी किरण भाई. आप मीत अब जिनको जिसको अभी ये वर्बली क्वेश्चन पूछने हैं, you can yeah Hello? Kiran, you can ask your question. Hello, sir. Can I ask a Yes, question? Siddharth has answered your question. Okay, they will not take more than Can I ask the 44 question? shares. Yeah, tell me. Hello, can I ask the question? Yeah, I asked you. Please go ahead. हेलो, TCS के बारे में है सर. वो प्रमोटर अगर बायबैक में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अगर भाव बढ़ने वाला है तो क्यों पार्टिसिपेट खुद कर रहे हैं? मैंने ऑलरेडी आपको उसका आंसर दिया. भाव बढ़ने वाला होगा उसका, ऐसा प्रमोटर को लग रहा है. अभी कोई आदमी, किसी को आप पे दया आ गई या किसी को आप पे बहुत दोस्ती की भावना आ गई कि भाई तुमने TCS का शेयर पकड़ के रखा है तो ये लो तुमको 3800 के शेयर का मैं 4500 दूंगा गिफ्ट मेरे तरफ से 700 रुपया. ऐसा कोई बिजनेसमैन तो होता नहीं है. क्या होता है आपके ख्याल से? उसको देना ही होता तो आपको डिविडेंड दे देता. लेकिन वो खुद देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है कि भाई ये 4500 का भी ये मैं 3800 का स्टॉक अभी खरीद लूं ना तो इसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा फ्यूचर में मिलने वाला है, तो उसी की वजह से वो खरीद रहा है आपसे स्टॉक. नहीं सर, पार्टिसिपेट वो खुद भी करने वाला है. 4500 में वो खुद का शेयर भी देने वाला है स्टेक. सर कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात. वो खुद खरीदने वाला है, बेचने नहीं वाला है, जहां तक मैं समझ रहा हूं. थैंक यू सर. हाँ, वो खुद आपसे रिटेल पार्टिसिपेंट से खरीदने वाला है स्टॉक. 4500 में वो बेच नहीं रहा है. तो 3800 पे अगर मार्केट में कोई स्टॉक आपके पास है जो 3800 में मिल रहा है तो 4500 में क्यों खरीदेगा आप? मतलब वो 4500 क्यों देगा उस स्टॉक, जब वो समझ रहा है कि इट इज गोइंग टू बेनिफिट मी, राइट? Yes, any other questions? And as Siddharth has mentioned here, they are not going to take more than 44 shares. Siddharth, if you want to unmute and if you can throw more light on the subject, it will be really helpful. Well, good morning everyone.
this is the max as per my understanding. जरूरी नहीं है 44 के 44 shares ले ले. They may take 10 also, they may take 20 also, depending on how much people are Participating. going for buyback. Yes. So this is the maximum one can give. तो अगर कोई अभी मार्केट से लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल 3800 चल रहा है एंड somebody wants to buy, so if they buy तो उसका रिकॉर्ड डेट देख के बाय कीजिएगा एंड 2 महीने ओवरऑल होल्डिंग रहेगा, वो सब सोच समझ के बाय कीजिएगा. ये भी हो सकता है कि शेयर का प्राइस 4500 से ज्यादा हो जाए और ये भी हो सकता है 3500 भी हो जाए. तो अगर बायबैक में आपके पूरे शेयर नहीं गए और आधे शेयर गए या 30% शेयर गए, तो बाकी का लॉस आप बेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो भी ध्यान रखिएगा. फायदा होगा, चांसेस ज्यादा है, बट ऑल दिस कैलकुलेशंस यू हैव टू डू एट योर एंड. व्हाट इज योर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, अकॉर्डिंगली यू कैन डू. बट 1,98,000 होगा 4500 into 44 शेयर्स के हिसाब से. उससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो आपको मार्केट से बाई करके पार्टिसिपेट करना चाहिए. सो ये मोटा मोटा मेरा अंडरस्टैंडिंग है. और मेरा भी वो करीब करीब वैसा ही अंडरस्टैंडिंग है. किरण जी, आप, मुझे लगता है आपको आपका आंसर मिल गया होगा. ओके. देवल सोनी जी के पूछ रहे हैं कि स्टॉक इज बिलो 200 EMA एंड हैव लॉस ऑफ 20%, देन व्हाट टू डू. देखिए, आप आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा ये मैटर में. लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिया था कि भाई जलता कोयला जो है उसको हाथ में रख के क्या फायदा होगा, वो आपके हाथ में छेद ही करेगा, बराबर है, आपको नुकसान ही करेगा. तो डोंट होल्ड ऑन टू बर्निंग कोल. वही पैसा हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है कौन सा शेयर की आप बात कर रहे हैं, कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं, but you can invest the same money in some other stock which is going up or which is growing strong or which is going ahead instead of holding on to the burning coal. जलता हुआ कोयला हथेली में पकड़ के किसी को फायदा तो हुआ नहीं. Hey, you can unmute Mr. Munaf and Mr. Raghavendra. उनको मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन पूछना है वर्बली. Yes, sure. Hello. Hello. Can Yes, you hear Mr. me? Raghavendra. Yes, yes. Sir, thank you for your nice this one. It's a seminar today. I liked it actually. You have given a nice introduction to your next week's workshop. Mother, father, and all that I liked. I have a question, sir. I got Yes. an allotment in ABSL AMC IPO 20 shares at 712 rupees. Okay. And today the script is trading almost at 560 or odd amount, almost 20% down. So my question is, should I book loss and then this one invest elsewhere, or I should hold on to the stock? Do you see good prospects for this ABSL mutual fund? That I want to know. Actually, I don't know the fundamentals of this company, and I would not comment about it because we need to really understand when we invest in an IPO, we need to understand the account books of that company, and I am not 100% read the account books of that company, so I would not like to comment, but I will try to ABSL Asset Management, Aditya Birla AMC. Yes, please. Yes. Yeah, I will try to look at the stock. Just a minute, I'll share the screen with you. We'll do a live analysis of that stock. Okay. So now, if you look at the, why I have turned the chart into an hourly candle. Okay. So on an hourly chart, this is what the chart looks like. Okay. From the day it listed. Yeah. So from the day it listed, it is continuously in a downtrend. It जो green line जो mother हम बोलते हैं, red line जो father बोलते हैं, तो उसके नीचे वो जाने लगा. देखिए इधर तो somewhere over here, if you would have booked your losses, then it would have been good. And now it is 200 hours, but this is hours data only.
This is not days or weekly data. Usually in lot of companies, we have data of hours, days and weeks, which is more important, more authentic data. This data is on hourly chart. So if now you can say, in my opinion, if the price goes below 500, now it is trying to form a bottom. यहाँ पे bottom बनाने की कोशिश कर रहा है. Okay, around 500, 490, 480 पे ये स्टॉक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है. अगर इसके नीचे जाता है तो आप लॉस बुक कर सकते हैं. बीसी स्टॉक है, ज्यादा स्टॉक नहीं है, तो ज्यादा इतना लॉस नहीं होगा. लेकिन हो सकता है यहाँ से वो बाउंस करके ऊपर जाए. तो एक 475, 480 का स्टॉप लॉस रख के यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक. थैंक यू सर. इन माय ओपिनियन, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो गया है काफी. Whatever loss was going to happen has happened. We hope that it will form a bottom somewhere over here and it rises from here. Okay, next question, please. Munab bhai wants to ask the next question. Hey. Yes, he can unmute himself also. And Siddharth bhai, before Munab bhai answers, there is a question about TTML. Would you like to answer? We have a TTML expert in the group, guys. Siddharth bhai, he had won our Christmas contest also, जिसमें उन्होंने TTML पिक किया था, और वहां से जो रॉकेट छूटी है TTML की, वो कहाँ पे गई वो सब हम जानते हैं. बट मैं यही कहूंगा कि जो those who live by sword die by the sword, जो अपर सर्किट में ऊपर जाते हैं वो अपर सर्किट में नीचे भी आते हैं. तो ऐसे स्टॉक में थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए. ये मेरी टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पे आपसे सलाह होगी. लेकिन सिद्धार्थ भाई इज एग्जैक्टली द पर्सन. My views for TTML is if it doesn't stop lower circuit on Monday, it will still continue to fall between 140 to 150 levels. And बाकी तो don't know. But Monday, if it doesn't turn around, मतलब lower circuit भी लगे और closing होते होते lower circuit से बाहर नहीं आता है, तो maybe we can see 140 to 150 levels also, maybe 145 around. So these are my levels for TTML. I expect Monday maybe support can be seen. काफी फॉल हो चुका है, अब ज्यादा चांस कम है. बट जो न्यूज आए थे जिसमें गवर्नमेंट को 41 के प्राइस से देना है, सो दिस इज द रीजन ऑफ मेजर फॉल. एंड ऑब्वियस है कि लोगों के सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे तो हर कोई बेचने जाएगा, लेना कोई नहीं चाहेगा, सो इट विल कीप फॉलिंग. बट आई थिंक मंडे स्टेबिलाइजेशन होना चाहिए, दैट्स माय व्यू. और नहीं होता है तो 150 के नीचे भी मिल सकता है. Yeah, somebody also mentioned 140 to 150 will be major support. Yes. Okay, good. Talakshi bhai said that Vishal, your was great speech as always. Thank you very much, Talakshi bhai. We respect you for your knowledge and wisdom. Deval Soni has given the record date. I don't know if it is true, but as per him, it is 21/2022. It is not the promoter who is buying, it is company who is buying. कंपनी प्रमोटर सेम ही चीज है, कंपनी खुद खरीद रही. हाँ, सही बात है तलक्षी भाई की. तो कई जगह पे कंपनी खुद बाय कर रही है, तो उसका रीजन कंट्रोल भी हो सकता है, ज्यादा कंट्रोल होना, परसेंटेज ऑफ शेयर बढ़ाना. सो दे कैन टेक पावरफुल मोर important decision on their own. Why HCL Technologies has fallen? You have seen that Nasdaq से लेके सब जगह टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैव टेकन अ बीटिंग. मैं आपको आईटी इंडेक्स दिखाना चाहूंगा. इधर आईटी इंडेक्स में क्या हुआ है. Many of the IT stocks are falling and IT index has fallen a bit. मैं इधर आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा. आईटी इंडेक्स का, उस पे से हम समझने की ट्राई करेंगे कि आईटी इंडेक्स में एक्चुअली क्या हुआ.
HCL और काफी सारी IT कंपनीज, KPIT, बिरला सॉफ्ट, ये सब काफी सारी कंपनीज गिरी। तो क्यों गिरी हैं उसका हम टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो दिस इज IT कंपनीज ऑन अ डेली स्केल। तो अगर आप इधर देखें तो एक IT कंपनीज में यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन, राइट? I hope that you can see my screen. Okay. तो IT कंपनीज में एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद बड़ा मेजर ब्रेकआउट हुआ, and you see it went on to make new highs at 39. This is IT index, Nifty IT index. So it went on to make a new high 39442. जब भी whenever there is a breakout, what happens is that a company tries to come back and test the breakout. So now when it comes to test the breakout from where it had broken out, that has to again give support to the breakout, or this 50 EMA, something has to support it, and from that support the price will again start climbing upsides. But now here what happened, it had broken out from here, but when the index came back to take support over here, this line could not give support to the IT index, so it has gone further below. So now if you can see these green lines, so maybe IT will take support from over here, or from over here, or from the Papa line of 200 EMA, and then again it might try to reverse, form a bottom first, and then it will try to reverse and go back to the previous high or the new high from over here. So in a long term, all these companies, I don't see any problem in the IT index, but yes, on a short term, there might be little pain remaining in the fall of IT index, HCL, KPIT, ये सब में थोड़ा बहुत, क्योंकि IT index ही weak है अभी, तो हो सकता है वो यहाँ पे सपोर्ट ले ले जहां पे अभी है, क्योंकि उसने यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई तो किया था 35928 पे. So maybe it tries to take a support over here on Monday and tries to reverse, or it can try to take a support from 35845 level, or it can try to take support from 34841 level. कहां से सपोर्ट लेगा, एग्जैक्ट टॉप एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं लेवल्स आपको दे रहा हूं कि यहाँ कहीं से ये 4-5 जो लाइन है या ये रेड लाइन है, इस जोन में से कहीं से IT शुड टेक द सपोर्ट एंड इट शुड ट्रैवल अगेन अपवर्ड्स. अगर यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लेता है तो और भी ज्यादा भयंकर करेक्शन हो सकता है. अगर 50 या 200 EMA के नीचे आ गया, पापा लाइन के भी नीचे आ गया, तो फिर IT इंडेक्स विल फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. बट उतना ज्यादा नीचे गिरे वैसा लग नहीं रहा है फिलहाल. I think it should take support somewhere over here, and I think this, इसको मैं करेक्शन के तौर पे ही देखूंगा, क्योंकि IT में आप देखो तो ये पिछले 5 साल में कंटिन्यूअस एक बुल रन दिया है इसने. यहाँ से 2021 से कंटिन्यूअस एक बुल रन था, और 39,317 पे it made a peak, and then little bit correction is due in IT. That is what is happening in IT index. Okay. Munab bhai, what will be the next support level? Deepak Jadhav ji, Smart Plus न्यूज़लेटर में मैंने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स दिए हैं. मेरा एक कॉलम आता है उसमें स्टॉक स्कैन, उसमें मैं 1-2 स्टॉक देता हूं और निफ्टी के बारे में भी बात करता हूं, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा. I have given support levels in that, but yes, I agree with your study. In my this thing also 17,300 250 will be the next support. I agree with you on that point. Any other questions, guys? मुनाब भाई को मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन पूछना था, तो मुनाब भाई आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाँ सर, હું ટોટલી છે ને પ્યોરલી ઇન્વેસ્ટર છું,
મારી સ્ટ્રેટેજી એવી છે કે હું કોઈ શેર વેચતો જ નથી. મારી પાસે 1975 ના શેર છે મારા ડેડીના, બરાબર? એટલે મારા જે ક્વેશ્ચન્સ પણ હોય છે બહુ બેઝિક અને ફંડામેન્ટલ ક્રશ સુધીનું જ હોય છે. મારો એક પોઈન્ટ છે સર તમને પૂછવાનો કે કોઈ પણ કંપની સારું પરફોર્મ કરતી હોય તે વખતે શું થાય કે એના શેરના ભાવ વધે. તો હવે એ શેરનો ભાવ વધતા હોય છે તો એ કંપનીના પ્રમોટર્સ, એ કંપનીનું મેનેજમેન્ટ વધારે કે પછી એ એટલે કઈ રીતે વધતું હોય છે સર? એને કંપનીના મેનેજમેન્ટને કોઈ એના સાથે કન્સર્ન ખરું સર? કન્સર્ન તો હોય સર, કારણ કે આજે જે प्रमाणेનું रिटेल पार्टिसिपेशन થઈ રહ્યું છે ને, जिस तरह का रिटेल पार्टिसिपेशन हो रहा है ना मुनाफ भाई, तो उसमें क्या है कि जो शेयर होल्डर है ना, वो भी मैनेजमेंट से जवाब मांगते हैं कि भाई आपकी शेयर का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। आईटीसी के एनुअल जो ये रिपोर्ट देते हैं, रिजल्ट देते हैं, शेयर होल्डर्स मीट होती है, उसमें शेयर होल्डर क्वेश्चन पूछता है मैनेजमेंट को कि भाई आप ऐसे स्टेप लो जिससे शेयर का प्राइस बढ़े, जिससे हमको फायदा हो, हमने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। आज का रिटेल इन्वेस्टर काफी बुद्धिमान हो गया है, काफी बोल्ड हो गया है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट, कौन प्राइस बढ़ाता है? तो इन्वेस्टर ही प्राइस बढ़ाते हैं। सप्लाई और डिमांड का खेल है सर। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उसके शेयर की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जैसे बढ़ती है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर खराब परफॉर्मेंस करती है तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी कोई शेयर की। आज कोई लेने वाला ही नहीं है कोलगेट का शेयर, तो कोलगेट 1450 पे मिल रहा है, राइट? जब लोग समझेंगे अरे बाप रे एफएमसीजी में तो तेजी आ गई है, कोलगेट तो बढ़िया शेयर है, कोलगेट ने तो इस साल 500 रुपए का डिविडेंड दिया 1400 रुपए के शेयर पे, नहीं दे रहा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं फिर से। तो अगर इस तरह से कोलगेट का कुछ ऐसा अट्रैक्टिव हो जाए तो लोग टूट पड़ेंगे वो लेने के लिए, तो डिमांड बढ़ा, तो डिमांड अगर बढ़ा तो शेयर का प्राइस बढ़ा। इस तरह से शेयर का प्राइस बढ़ता है, कम होता है, बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, बेस्ड ऑन एक्शन दैट कंपनी टेक्स। आईटीसी के इन्वेस्टर ने यहां तक बोल दिया कि अरे भाई आप डिविडेंड देते हो, हमको डिविडेंड नहीं, शेयर का प्राइस बढ़ाओ। तो आज का जो इन्वेस्टर है वो काफी बोल्ड हो गया है, वो काफी बोल्ड क्वेश्चन मैनेजमेंट को पूछता है, और मैनेजमेंट को कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को की जवाबदेही है, अगर शेयर का प्राइस गिरता है और शेयर इन्वेस्टर को नुकसान होता है तो उसमें इन्वेस्टर बोर्ड मीटिंग में सवाल भी खड़े कर सकते हैं। सर आप इवन धीरूभाई अंबानी पे सवाल खड़े किए थे लोगों ने। आप गुरु फिल्म देखना, उसमें बहुत अच्छा दिखाया है। ओके सर, थैंक यू सर। મારો ક્વેશ્ચન એવો છે કે ડિવિડન્ડ જ્યારે કંપની આપે તો પ્રમોટરને પણ ડિવિડન્ડનો લાભ મળે સર? જી, જેટલા એની પાસે શેર હોય એ પ્રમાણે એને લાભ મળે। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ અને સર। જે પ્રેફરન્શિયલ શેર હોલ્ડર હોય એને વધુ લાભ મળે, પહેલા એમને લાભ મળે અને પછી નોર્મલ રિટેલ ઇન્વેસ્ટરને લાભ મળે, નોર્મલ શેર હોલ્ડરને લાભ મળે। ઓકે, થેન્ક યુ સર। No problem. It was a pleasure. If there are no more questions, guys, we can end this session. And Yes, we can wrap it up. And there is once one more again, question: if Nifty is in correction mode, why TCS promoters are buying at higher prices? Because they feel, वही मैं बोल रहा था कि किसी को आप पे दया भावना तो है नहीं कि चलो चलो ये मेरा इन्वेस्टर है, मैं इसको 700 रुपए का गिफ्ट दे दूं, ऐसा तो है नहीं। वो देख रहा होगा, the customer might, the promoter, the company might be feeling that my share is not worth 3800, it is worth maybe more than 5000, that's why they are buying it from you for 4500, right? Yes, Hed, you can take one. yes, there's one more question, I guess. We can keep it to a last question. That Okay. is, sir, your view on KPIT and Naukri. Okay, Naukri on weekly charts, this will be, ये देखिए इधर ऑलरेडी बनाया हुआ चार्ट है, तो ये ग्रीन लाइन, ये जो सपोर्ट था उसके नीचे ऑलरेडी आ गया है। एंड माय फाइनल सपोर्ट फॉर
Naukri will be around this 3500. If it hits 3500, I think you can exit. If it closes below 3500, you can exit. और कब खरीदना है, नई एंट्री के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो एक अच्छा स्टॉक है, आप यहां कहीं से वो जब बाउंस करना चाहे, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, बाय अ बाउंसिंग बॉल. तो जहां पे वो बॉटम फॉर्म करके व्हेन इट स्टार्ट्स बाउंसिंग बैक, at that time you can buy it after it crosses maybe 200 EMA or 50 weeks EMA. On daily charts, it is already gone below 50 and 200 EMA. And this will be my final support line, 4081. Okay, KPIT. KPIT again, it is in a correction mode. Okay, maybe ये देखिए, ये पर्पल लाइन एक बना के रखी है मैंने, यहां तक ये आ सकता है 580 590 की रेंज में. तो इट इज अ गुड स्टॉक. यहां से जब वो बाउंस कर रहा हो तो उस टाइम पे आप इसमें एंटर कर सकते हैं. यू कैन एंटर KPIT when it forms a bottom. Maybe it can bounce from here 660 level. If not, then it can come up to 580 590 levels and it can bounce from here somewhere over here 570 to 580 levels. When it bounces or starts going up, that will be the ideal time to buy KPIT Technologies. बिरला सॉफ्ट एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं. बिरला सॉफ्ट भी एक अच्छी कंपनी है. सिमिलरली ये बिरला सॉफ्ट में क्या हुआ, ये जो चैनल था वो चैनल भी तोड़ने की कोशिश कर रही है. Probably it will take support at 476 or somewhere over here. If it does not take support at 476, see, it is a continuously falling knife. So new entry is difficult, but whenever it takes support somewhere and starts bounce, that will be the time to take fresh entry into Birla Soft. The questions are not these are never ending things. We can continue such questions in workshop because we will have a more time period over there. Exactly. So one last time, we generally do not ask anybody to to go to our YouTube channel and that type of subscribe to like to. We do not ask for that because that's a natural thing. If you will like our webinar, you will surely give it a like or anything. So but we will ask you to join the workshop because that's for your benefit completely. Though the fees are very nominal, and much more taking towards workshop is that if you have enjoyed this webinar, surely you are going to enjoy the workshop because you are going to learn something much more deep and much more interesting with live or the examples which he already showed, means his favorite topic, cricket. So we will get to know much more things and we can relate, and such type of examples usually help everybody to catch things very quickly. So we request you all to join the workshop, and you can also share the webinar link as well as workshop registration links to your friends or colleagues so that they can also get some knowledge through us. So calling out a day, and happy Sunday to all, and enjoy investing. Thank you. Happy investing and happy Sunday to everyone. It was a pleasure talking to all of you, and I hope you enjoyed the workshop, and you can give your comments in the chat box. Some of the very nice comments we have all received. So thanks a lot once again, and hope to see you next week. Yes. Bye everybody. We are stopping YouTube stream now. Okay. Bye bye.